welcomes you all to Sense for Sense. I, Gaurav Budadu here, representing Institute Innovation Council IIC. IIC is an initiative started by Government of India which organizes events and seminars that are related to startups, innovation, entrepreneurship, and intellectual property rights. The main aim of the committee is to systematically foster the culture of innovation and build a startup ecosystem. I, Deepika Tiwari, representing the Training and Placement Cell at SVKM's Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy. Training and Placement Cell believes in providing promising career opportunities. The cell acts as a strong link and facilitator between potential recruiters in encompassing pharmaceutical industries, clinical research organizations, medical communications, insurance, etc. Over to you, Gaurav. On behalf of Institute Innovation Council and Placement Cell, I would like to welcome our esteemed speaker for the day, Mr. Vipul Bane. On behalf of BNC, in today we will be discussing about importance of savings, financial terminologies, entrepreneurship and financial balance, investment tactics, how to approach angel investors. Before we start the event, I would like to invite Dr. Sandeep Sine to enlighten us with a few words. Over to you, sir. Yes. Yeah, thank you, Gaurav. And I really appreciate the efforts of Placement Cell as well as Institute Innovation Council Cell to pick up this unique and innovative topic, that is the financial literacy. Financial literacy helps people in becoming the independent and self-sufficient. So it empowers us with basic knowledge of investment options or maybe the financial markets and capital budgeting, isn't it? And for this particular topic, I had a given thought when students had come up with this particular proposal. So only one thing, or maybe the only one name was in my mind, and that was of Mr. Vipulji. Because with Vipulji, I am associated from year 2015, and whatever his advice or whatever his overall study about the finance, that is really commanding, and I really follow Vipulji in context to this particular case, that is the finance. So on behalf of Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy, Vipulji, we welcome you and hope you can give the inputs to our young students. Maybe after a few years down the line, they will be in a service sector, maybe they will have their own entrepreneurship, or maybe they have their higher educations. So the finance is one of the aspect which covers all these segments or maybe all these domains. So your inputs in this context will be really grateful to all our stakeholders or to all our students. So with these few words, without taking too much time on this Sunday morning, we will open up this session. Over to you, Gaurav. Thank you, sir, for your precious words of wisdom. Over to you, Deepika. So let us kickstart the event by introducing our esteemed and honored guest and speaker for today, Mr. Vipul Bane. Mr. Vipul Bane has done his Bachelor's of Science in Chemistry from Mumbai University. He has 25 years of experience in BFSI. He has won 15 business awards and has been conducting fee-based practice since 2011, trusted by over 500 happy clients. Over to you, Gaurav. Before starting the event, I would like to give you few instructions. If there are any questions, please put it in the chat box. Your questions will be answered at the end of the session. I now request Mr. Vipul Bane to acknowledge all the participants. Over to you, sir. Uh, Thank you so much, Dr. Zain, the Placement and Innovation Cell of SVKM College. And I'm so glad to see on a Sunday morning, these many students. So first of all, a warm welcome to all of you.
I'm so glad that you're all, looking forward to a session on finance. And finance is something which is, a subject which has been of extreme interest to me, and I'm very passionate about this subject. I've been interacting with students, uh, clients of across all ages and all profiles. And one thing which is similar to all of them is all of us need financial advice. Now, the reason is very simple. Finance has not been taught in a way which it should be in our education system. So there is a huge lack of awareness about personal finance. And that is where I thought I would like to make a difference. And that's how my journey in the financial sector started. So it's been 2.5 decades now, and I'm really enjoying this journey. And as you rightly said, I would definitely like to provide all the inputs which I can in today's session. So let's start the session. Before that, I would like to have some inputs, sir, if you allow. Sure. See, now Institute Innovation Council as well as the placement cell, we have one separate setup apart from the academics. So this is a government initiative, and government is thinking that the student should get the cognizance about entrepreneurship. That is one of the aspects. And when we are talking about the entrepreneurship or maybe the kind of small ventures, at the time the question of finance is there. So for example, pharmacy segment or maybe the engineering segment, we don't have that much expertise to give the inputs to our students in that particular segment. So on our committee, we have some external representation also that can give inputs related to the financial investments, or maybe suppose a student is having some kind of the idea, and if he or she wish to conceive that particular idea to get converted into the prototype or maybe final product as in terms of the service or maybe kind of the final product. So at that time, these the persons like you that plays very important role, and to fill this particular gap, we have an external representation of all of you like the financial members. So we expect to your support in this particular aspect to managing the IIC as an external representation also in future. Over to you, sir. Sure. Thank you so much. Yeah. So let's start our today's session. So I'll just share the screen. Can all of you see the screen, the presentation? Yes, sir, it is visible. Okay, thank you. So as the title goes, Sense for Sense is primarily to understand the nitty-gritties of various aspects of finance. So as a financial coach, I am glad to present you this particular presentation. So I do not want to again repeat the things which already have been said. I would straight away go to the today's agenda. Let's start with the topic for today is sense for sense. The first thing which comes to anybody's mind would be, why should anybody save? Right? So should you want this session to be interactive or a monologue? Yeah. How do you want the session to be? You want this to be an interactive session? Yeah. Yes. Okay, so anyone of you would like to share what is the need for savings? Why should we save? What could be the possible reasons for savings? So that in future we can use that money for our purposes, or in the case of emergency. Okay, so emergency is one. Okay, great. Anyone else? So that we can invest that money saved into further assets. Great, to grow our assets. Fantastic. Anyone else? Any other thoughts? Okay, so I'll just cover the various aspects of savings. So it is one of the essential aspects of creating wealth and securing our financial future. It provides you a cushion for a rainy day. So any uncertainties, which perhaps the pandemic, it could be an accident, it could be a
hospitalization, any kind of emergency situation, we need a fund which would come from our savings. Okay, now if we have this financial discipline, we can set aside a regular sum of money which can help us achieve our financial goals, right? It could be our higher education, it could be our retirement, it could be creating financial assets, buying properties, so on and so forth. It can also help you donate this money for a noble cause, isn't it? And the most important one is to beat inflation, right? All of you would have studied in your academics the concept of inflation, right? The time value of money, right? Today's 100 rupees would not be the same after 10 years, right? So what would eat away the a large significant portion of this money is inflation, right? So we need to beat this inflation, and that is why savings is very, very critical. Okay, so let's move ahead in the session. Now we've learned the various reasons why because of which we should save. Now, what are the reasons why savings becomes very, very important in finance? It provides financial security. It provides you a better future. It provides in any kind of unfortunate event, a sense of security. An emergency fund is a must in today's times. Most importantly, it offers peace of mind. Because if you do not have savings, and in tough times, you will be depressed. You would feel low, that where will the money come from? How would you run your family expenses, and how would you meet up with your day-to-day needs, right? Now, for any of your goals, whether it is short term, medium term, long term, you need to have savings investments, right? So now Dr. Zain talked about entrepreneurship, right? Now, any kind of business today requires financial management. Now we'll in today's session cover both the aspects, the personal finance as well as business management or the financial management. So let's first talk about entrepreneurship and the financial management. Now, I started my entrepreneurial journey in 2011. It's been over a decade now, and I'm enjoying this journey. Now, as any businessman starts his business, there are very important things to be considered. Okay, if you are aware, 90% of the businesses shut down in the first 3 years, not because of lack of ideas or not because of not identifying the right problem, but it is because of financial issues. It could be liquidity issues, it could be the money not coming into, or they have not planned their business well, and that is why most of the businesses close down in the first 3 years itself, right? So financial management is the very, very important aspect of entrepreneurship. It is the backbone, I would say. Now, even the country has to have a very sound financial prudence, and that is why a fiscal planning is a must, right? So you must have learned the financial budget, now which talks about the various aspects of the GDP, the fiscal deficit, so on and so forth, right? And similarly, every company has a balance sheet and profit loss statement which talks about its financial health. Every individual also should have a personal financial plan which would give them an idea as to how to manage their personal finances. So let's start with the entrepreneurial aspect. So every business, whether it is new business or a growing business, or where there is a huge stagnation in the business, any phase of business, you require financial management. Now, the first thing is, how do you get the money to start business? Many of the businesses, they require initial investments. So there is something which is called angel investment, venture capital investments,
crowdfunding, hedge funds, alternative asset management. Now, these are the types of investments which a business requires initially as well as to grow the businesses. Now, before they start the business, planning for how to grow the business or how to get the business started, what will be the capital requirement, how should the business break even, and how much time will it take. So the cash flow management, all of that is required. Now, if this planning is not there, there is a very good chance that in spite of innovative ideas and innovative solutions, this business might not sustain. The profitability aspect also needs to be considered. Now, you must have seen, what is required for a successful business. It is not just a great unique idea, but also effective decision making, which requires a lot of financial decisions, cost efficiency, and for a business to be sustainable, maximizing profits is also a must. And there has to be a fine balance between ensuring that the customer is happy and the business is sustainable. So profits is also, if a business is not profitable, it will not last long. Now, how many of you have heard the term balance sheet? How many of you have actually prepared a balance sheet in your maybe academic curriculum? Do you have this subject? Financial accounting or Sir, my business friends did it in business 11th and finance? 12th standard. Okay, 12th standard. But in your pharmacy, financial management, is there a subject which teaches you all these things? No, How sir. to tally a balance sheet or how to read a profit loss statement, all these aspects? Yes, in third year there is a subject drugstore and business management. Okay. So all those who are in third or fourth year, I'm sure you would have heard these terms, right? So the company's assets, the liabilities, how to the debit side, the credit side, how to tally a balance sheet, right? Now a balance sheet is a mirror of company's financial health, and the profit and loss statement perhaps gives you a picture as to what are the capital assets or liabilities of a company, right? So it is very, very important and critical to understand these terminologies and understand the financial health of an organization. If they need finance, how much, how can they arrange the finance is one aspect, but how much finance is required and for what purpose? What should be the ROE, return on equity, or what is the return on investment? That is something which is very, very critical to any business, right? Have you heard this terminology, ROE or ROI? Anyone? No, sir. Yes, sir. Okay, can anyone explain what is ROI or ROE? Quickly. So the amount of turnover or profit you get with respect to the invested amount. Okay, so suppose if I have invested say 1 crore in a business, right? How much is the annualized profit that I make out of it, right? So if I'm generating 20 lakh rupees every year on the capital of 1 crore, that would be my return on investment. Am I correct? Hello? Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So let's understand the various financial terminologies one by one. I'll quickly, take you through some of the important terminologies and we can discuss all of them. Okay. So we'll discuss in the context of personal finance as well as business finance. Okay. So the first one is asset allocation. So what is asset allocation? Can any one of you tell me what is asset allocation? Have you heard this term? Anytime? Anyone? Sir, can I try? Yeah, please. Sir, allotting some amount of assets for a given cost.
Okay. Asset allocation is allocating your assets into various asset categories. So in personal finance, there are 5 different types of assets which one can allocate. The first one is cash. We need some emergency monies which is highly liquid. So it could be your savings bank account, it could be your fixed deposit, it could be anywhere where the money is highly liquid. The second would be debts. Now what do I mean by debts? It is, your fixed income securities. It could be your provident fund, it could be your NCDs, it could be your bonds, fixed deposits, corporate fixed deposits, so forth. Anything which gives you a fixed income. Then comes your equities, that is the stocks, where you have a probability of profit or loss. There's huge volatility in this asset class, but it is most rewarding in the long term. Then is real estate. That is, it could be a commercial estate, it could be a residential property, it could be a land. That is the real estate. And the last one is commodities. And amongst all the commodity segments, gold is the most popular one. I think Indians are fond of gold. So these are the 5 asset classes. Then we also have alternative, which is not very popular in India. So the main 5 asset categories we just discussed, that the ratio of these assets in our portfolio is called asset allocation. So maybe if I have a portfolio of 5 crores, of which maybe 2.5 crores is my real estate portfolio, which is the primary property which I own, where I reside. The rest 2.5 crores could be distributed into the other 4. So maybe I have, say, at any given point of time, a 5 lakh rupees cash in my savings bank account or a fixed deposit. Then I have maybe, some amount lying in form of gold, which could be ornaments as well as gold coins, or maybe it could be paper gold. Then it could also be that I have some amount in debts, PPF, corporate bonds, all of that. So the distribution of my portfolio into these 5 asset classes would define my asset allocation. Now 93% of my financial success would come through the right asset allocation. Right? So many of the investors today, they make ad hoc investments without having any clue of what is the asset allocation they need. Now, just like financial health, I'll just give an analogy with compared to our diet. Now, if we just randomly eat anything and everything, right? Do you think we'll be healthy? Yeah. No, sir. No, sir. Right. So we need to have some proportion, right? We need to have proteins, vitamins, fats, minerals, all of that, right? We cannot just keep consuming, fats and increase our weight, right? We also need to have muscles. For that we require proteins. We need to have those vitamins which are very, very critical to us, and minerals. So all of these are essential for our physical health, right? Now, similarly, all of these asset classes are very, very critical to us. Now, for instance, somebody has few goals which are short term in nature, and if I do not have any cash assets, can I meet those short term needs? I have a lot of real estate, I have a lot of equities, but my cash allocation is very, very low. Then my short term goals would be compromised, right? Similarly, if anyone is high on cash, right? If I have huge amounts lying in savings account, fixed deposits, all of that, right? And if my lifestyle inflation is around 10%, all these savings, fixed deposits, etc., they give me around 5.5% post-tax returns. Then what will happen is my long-term needs would be, at a stake, compromised, because a significant portion of my wealth will be eroded as the inflation would eat that portion. So my long-term goals would be compromised. So I need to have a balance. So I cannot just say I will have only foods which are protein, high on protein, or I need to have a right balanced diet. Similarly, my asset allocation has to be balanced. Now, each one of us would be having a different asset allocation because our goals would be different, our
time horizon for all these goals would be different. Our resources will be different. Therefore, our investment pattern has to be based on our goals. The asset allocation has to be based on that. How many of you know what is present value, future value? I'm sure all of you would have learned this time value of money concept. Yes? No? Yeah, I want some answers. Students. Yes, sir. Yeah? You understand what is time value of money, present value, future value? 100 रुपया मेरे पास आज है, 10 साल के बाद उसका वैल्यू 100 रुपया ही रहेगा? No, sir. No, sir. ओके, सो सपोज 7% इन्फ्लेशन है, तो 10 साल के बाद उस 100 रुपए का वैल्यू क्या रहेगा? एनी आइडिया? ₹10 इन टुडेस टर्म्स कितना रहेगा उसका वैल्यू? 100 रुपया है मेरे पास, 7% इन्फ्लेशन है, 10 साल के बाद उस 100 रुपए का वैल्यू क्या रहेगा? 50 के अराउंड आ जाएगा सर। एब्सोल्युटली यूर राइट. सो ना वो रूल ऑफ 72 जो आपने अगर पढ़ा होगा, सो 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 10, तो जो है आपका जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा 100 रुपए का, राइट? सो दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेटवर्थ, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दिस, राइट? सो आपका जो नेटवर्थ क्या है आज की तारीख में, नो ईच वन ऑफ अस, कोई बिजनेस का हो या इंडिविजुअल का हो, नेटवर्थ क्या है, राइट? सो हम लोग बोलते हैं ना कि वेदर इट इज मुकेश अंबानी और एनी टॉप बिजनेसमैन, उसका नेटवर्थ कितना है, कितना बिलियन डॉलर्स का उसका नेटवर्थ है, राइट? नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया. इट इज द अमाउंट ऑफ money returns which I generate on a investment. Suppose if I have a portfolio of 5 crore, at what rate it is growing year on year, that is your return on investment. Now it could be a business asset, it could be a financial asset. Savings ratio, now in personal finance this is very very important. अगर मैं 100 रुपया कमाता हूं, उसमें से कितना सेव करता हूं? So suppose if I am saving 30 rupees out of 100, then my savings ratio would be 30. Clear? Hello? Can I hear aloud? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, see, there are two ways of learning. एक तो जो है हम लोग terminology सीखते हैं और because we want to show that we are smart. Second way of learning is so that we apply it in our lives and we become financially more prudent, right? Which one would you like to, which way of learning would you like? To be financially more prudent. Yeah, so I have just shortlisted the ratios which are going to be applicable in our lives. So there are so many others which I have not considered here. So these are most relevant to us, which we can apply in our daily lives, right? So maybe if you have to calculate your family savings ratio, right, तो उसके लिए क्या करेंगे? So आपके फैमिली का इनकम क्या है मंथली और आपके फैमिली का जो है सेविंग्स कितना है मंथली, राइट? वो आप आइडेंटिफाई करेंगे. तो आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल. अगर आपके फैमिली का मंथली इनकम है ₹1,00,000 और आपकी फैमिली जो है कमिटेड सेविंग्स कर रही है 30,000 रुपए का, तो 30% आपकी फैमिली का सेविंग्स रेशियो है. ना सिमिलरली व्हाट इज अ डेट रेशियो? नाउ इफ यू हैव अगेन द सेम एग्जांपल, 1 लाख रुपीज एज अ मंथली इनकम और आप जो है 25,000 रुपीज पे कर रहे हैं एज EMIs, then the debt ratio would be 25%. Got this? Savings ratio, debt ratio? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Now this is something which is important for a stock or for a portfolio. Price to earning ratio, right? So हम लोग सेंसेक्स का या निफ्टी का पी रेशियो ट्रैक करते हैं, हम लोग जो है स्टॉक का पी रेशियो ट्रैक करते हैं. नाउ व्हाट इज पी रेशियो? दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टर्म इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पी रेशियो? The price to earning ratio. Price to earning. What is the significance of this? It's the price of the share you have bought upon the earning generated from that share.
So if P ratio is below 25, Hmm. so it would be very much profitable for an individual to invest. Okay. If it's above 30, then it's almost like you are losing your most of the money in the share, but not gaining any interest or share in earning anything. ओके सो सपोज एक सेक्टर में दो स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है ओके एक का पी 15 है एक का है 30 विच वन विल यू बाय 15. हाँ 15 राइट तो जिसका पी लो रहेगा वो आप शेयर बाय करेंगे बिकॉज वो आपको चीपर लग रहा है राइट वैल्यूएशन उसका चीपर है या गॉट दिस यस ओके ग्रेट डेट टू एसेट रेशियो अगेन ये जो है हम लोग जैसे हम लोग हमारा जो है फैमिली के अंदर हम लोग जो है डेट रेशियो बात करते हैं वैसे ही बिजनेस के लिए डेट टू एसेट रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग बहुत बार जो है सिर्फ स्टॉक पी रेशियो पे डिसाइड नहीं करना चाहिए हमको उसका कंपनी का एसेट्स भी देखना है और लाइबिलिटीज भी देखना है राइट सो सम कंपनीज हैव ह्यूज डेट्स राइट सो उनका पी रेशियो हेल्दी होगा पर उनका कंपनी का जो है सब्सटेंशियल जो कैश फ्लो है वो डेट के डेट पे रीपेमेंट में जा रहा है राइट सो विल आई बाय स्टॉक्स व्हिच हैव अ ह्यूज डेट रेशियो शुड आई बाय No. सो अगर आपका इनकम जो है 1 लाख रुपया है और 60 रुपया जो है 60,000 रुपया जो है वो ईएमआई में जा रहा है इज इट अ हेल्दी सिचुएशन No. राइट सो अगर कोई बिजनेस है जहां सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है उनका डेट्स में जा रहा है उनका डेट रेशियो हाई है देन दिस कंपनी इज सूनर और लेटर गोइंग टू हैव अ टफ सिचुएशन राइट उनका मार्जिन कम है उनका आरओई कम है डेट रेशियो ज्यादा है देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम राइट ratios now these are very very important so अगर कोई कंपनी जो है उसका डेट कम है बट अगर वो कंपनी एफिशिएंट नहीं है राइट तो क्या होगा उनका आरओआई या आरओई कम रहेगा बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इन्वेंट्री टर्नओवर और उनका जो कलेक्शन पीरियड है वो शायद से वो बहुत ज्यादा है सो वो जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनके पास कैश फ्लो क्राइसिस रहता है एंड अगेन these companies they are not going to grow at a rapid pace right so हर एक बिजनेस में जो है कैश जो फ्लो है वो हेल्दी होना चाहिए राइट अगर सपोज किसी का मंथली इनकम जो है वो रेगुलर नहीं है व्हाट विल हैपन हेलो अगर कोई फैमिली है जिसका मंथली इनकम रेगुलर नहीं है देयर इज ह्यूज फ्लक्चुएशन इन द मंथली इनकम नाउ व्हाट कुड बी द रिपरकशंस ऑफ दैट They could be caught in a vicious cycle of debts and all. हाँ सो आपको टाइम एंड अगेन डेट लेना पड़ेगा राइट एंड बहुत सारे जो है सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे राइट ऑल ऑफ दैट विच इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी राइट सो डिफिकल्टीज रहेंगे राइट सो आपका जो बिजनेस है उसको एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है यू नीड टू हैव एन एफिशिएंट बिजनेस राइट अगर आप कितने भी ब्रिलियंट है पर अगर टाइम पे अगर आपने पेपर कंप्लीट नहीं किया तो विल यू स्कोर हाई मार्क्स हेलो No, sir. ऑब्वियसली ना स्पीड भी चाहिए ना हमको तो हमको जो टाइम स्टिपुलेट टाइम में हमको जो है कंप्लीट भी करना है ना आंसर शीट यस सो एफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो वो हमारा जो है कैश फ्लो हेल्दी होना चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर होना चाहिए एकदम हेल्दी राइट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिस इज द बॉटम लाइन तो कोई भी बिजनेस में जो है बॉटम लाइन अगर जो है वो अगर पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं होती है तो क्या होता है हेलो आर यू लिसनिंग सो अगर उसका ऑपरेटिंग Sir, प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी नहीं है नेट प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी नहीं है रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी इज नॉट हेल्दी राइट 10% है 5% है लायबिलिटीज बढ़ जाएंगे हाँ जी क्या होगा फिर इंटरेस्ट हाँ इंटरेस्ट कॉस्ट उसका 10% है या इट वुड sooner or later close down net profit margin 10% है और मेरा borrowing cost 12% है इंटरेस्ट कॉस्ट जो मेरा है वो 12% है क्या होगा कैश फ्लोज नेगेटिव में आ Business जाएगा ठप हो जाएगा. बिजनेस विल क्लोज डाउन राइट
सो मेरा रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हेल्दी होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा अच्छा होना चाहिए, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एनी बिजनेस एंड एवरी फैमिली। तो मैंने जो है पर्सनल फाइनेंस एज वेल एज बिजनेस फाइनेंस दोनों जो है कवर करने का कोशिश किया है, एंड दिस आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट वी मस्ट नो, राइट? ओके, नाउ द लास्ट वन विच इज लिक्विडिटी रेशियो। बहुत सारे बिजनेसेस में जो है लिक्विडिटी का क्राइसिस होता है एंड दे कीप बोरोइंग मनी, तो उनका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट रहता है, दे हैव अ कैश क्रेडिट लिमिट एंड दे स्टिल हैव उनके सारे जो एसेट्स है वो मॉर्गेज्ड होते हैं, so they are in constant trouble, right? But businesses which have high liquidity ratio which can raise money at a whisker, तो वो जो है businesses they will grow rapidly, उनका करंट रेशियो अच्छा है, क्विक रेशियो अच्छा है, सो उनका जो लिक्विडिटी रेशियो अगर अच्छा है देन दिस बिजनेस इज हेल्दी, राइट? तो अगर कुछ उनको बड़ा ऑर्डर आ गया दे शुड बी एबल टू रेज कैपिटल, राइट? यस और नो? अगर कुछ इमरजेंसी आ गया तो उनके पास लिक्विडिटी चाहिए, राइट? सो टू पे द एम्प्लॉइज टू fulfill their commitments, and that is why liquidity is very very important. अब during the pandemic, right, जिस घर में इमरजेंसी फंड सब्सटेंशियल था, they were able to survive during the pandemics, right? So बहुत सारे फैमिलीज को प्रॉब्लम्स हुआ था during the pandemic. Businesses had, many of the businesses had shut down. बहुत सारे कंपनीज में जो है उन्होंने ले ऑफ किया था. सो तभी अगर किसी का लिक्विडिटी जो है अच्छा था, they were able to sail through this crisis, right? इमरजेंसी फंड अगर आपका अच्छा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, परेशानी नहीं आई होगी. बट जिनके पास लिक्विडिटी का क्राइसिस था, जिनके पास 1 महीने का भी सेविंग्स नहीं था, उनका क्या प्रॉब्लम होगा? अगर कोई ब्रेड विनर जो है वो 4 महीने 6 महीने अगर घर पे बैठा है, राइट, कोई इनकम नहीं है, तो क्या होगा उस फैमिली का? बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है ना. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन मेनी सच सिचुएशंस, राइट, अराउंड यू, right? Therefore this is also very very critical, okay? Whether वो इंडिविजुअल के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, liquidity ratio is a very very important measure. Okay, now let's again come. So I am switching from personal finance to business finance so that both of these topics are covered, and there has to be some correlation in these two, because जैसे मैंने बताया कि जैसे कुछ टर्म्स जो होते हैं वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रियलाइज फाइनेंशियल फ्रीडम? या हेलो, Sir, everyone. how many of you? So only those who want to realize financial freedom can stay back, the rest can can leave the session. I'm just joking. So I think every one of us want to realize financial freedom, right? Isn't it? Yes, sir. Yeah. Yes, Now, sir. yeah, if that is true, what is your definition of financial freedom? What do you understand by financial freedom? So we are not dependent upon our parents Fantastic. for our expenses. So you are independent. Okay, what else? To generate even a passive income. Okay, so you have significant passive income. मतलब आपका जो महीने का खर्चा है वो आपके passive income से fulfill हो रहा है, right? It's been taken care of. Yeah, what else? Passive income as well as income generated from the job you are doing. Okay. Any other thoughts, ideas? So financial freedom is that phase of life when work becomes optional. आप ना ऑफिस को या आप कहीं काम पे जाते हो, किसके लिए जाते हो? बिकॉज आपको मजा आ रहा है, आपको जो है आपका स्किल, आपका टैलेंट या आपका पोटेंशियल जो है वो अनलीश करना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, राइट? सो यू सीक इनर हैप्पीनेस. आप जो है मतलब टू बी ऑनेस्ट 80% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया उन लोग काम पे जाते हैं, क्यों? घर चलाने के लिए, EMIs भरने के लिए. यस, दैट्स द रियलिटी, राइट?
very few are the ones who go to work because they really want to contribute something to the society, to the world. Yes. So financial freedom अगर आपके पास है तो फिर आप वही काम करेंगे जो जो आपको पसंद है, right? You would not do anything which, you know, perhaps which you hate to do, right? Yes. Yes, sir. So how do you realize that? अगर मुझको financial freedom चाहिए तो क्या करना होगा मुझको? Okay, so let's learn the various aspects of financial freedom. Okay, the first thing is you need to start early, right? If you start the early you start, the better it is. सब वॉरेन ब्यूफेट जो है ना, वो अगर आपने उनके बुक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा, राइट? So he started investments at the age of 13, right? And he often says in his interviews and in his books that I should have started it at the age of 6 when I started, you know, understanding finance, right? So I was already 6-7 years late, right? So if I'm sure, you know, आप 15-18 जो भी आपका एज ग्रुप होगा, राइट, यू वुड हैव हर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस. आपने जो है, कुछ लोगों ने आपने जो है सम पॉकेट मनी रिसीव किया होगा अपने पेरेंट्स से. सम ऑफ यू वुड हैव आल्सो अर्न सम मनी, राइट? पार्ट टाइम जॉब किया होगा, राइट? सो द अर्ली यू स्टार्ट saving and investing, the better it is, and we'll see in our, you know, subsequent slides the importance of that, right? So Warren Buffett became a billionaire at the age of 56, right? He became bankrupt 4 times during his this journey from the age of 13 to 56, right? And आज जो है 90% of his wealth has been distributed as charity, right? And he's extremely happy, and you know, he's well taken care of. Okay, so when I start my investment journey, savings journey, right, what is the second step I need to do? I need to have a plan, I need to have a vision, right? किसके लिए सेव कर रहा हूँ, क्या मेरे गोल्स हैं, राइट? वो पैसा जो है मैं जो कमा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, उसका क्या मैं एंड यूज करने वाला हूँ, राइट? आई नीड टू हैव written down financial goals, right? So I want to start my business, I want to buy a house, I want to buy a car, I want to go for a world tour, whatever. तो वो सारे जो goals है, I need to write down. It is said that आपका जो success है, when you write down, you know, your goals, right, then आपका success का chances जो है वो 30% बढ़ जाता है just by writing down the goals. It could be, and it's not just about financial goals, it could be any of the goals. वो हेल्थ के रिलेटेड हो, फाइनेंस के रिलेटेड हो, कोई भी, करियर के रिलेटेड हो, कोई भी. नाउ व्हाई डज माय चांसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द गोल्स इंक्रीजेस? व्हाट इज द रीजन? व्हाट कुड बी द रीजन? एनीवन? हेलो? सिर्फ लिखने से मेरे गोल्स का चांसेस क्यों बढ़ जाता है अचीव होने का? Sir, because if we list it out, then, you know, we are sure that we have to work upon it. So Right. it is right. So हमारे दिमाग में बहुत कुछ होते हैं, वो ड्रीम्स होते हैं, राइट? बट वंस वी राइट देम तो उसको हम लोग गोल्स में कन्वर्ट करते हैं. वो कैसे करते हैं? When we write down, it becomes specific, right? Right? You know, I can then measure them, I can then achieve them, have a plan to achieve them, and I will ensure that, you know, ये realistic है, वो dream नहीं है, right? And then I'll give a time frame to it. So then what happens is my mind starts working in that direction. वो बोलते हैं ना, एक बार मैंने कुछ बड़ा कुछ ठान लिया तो पूरी कायनात जो है मुझको हेल्प करती है वो अचीव करने में, right? My mind will constantly start thinking how to manifest that goal. I will start meeting the right kind of people, talking the right, you know, things. तो उस गोल के रिलेटेड मैं बात करूंगा, and then I will start getting ideas. मैं लोगों से, you know, सीखूंगा, अपने skills को improve करूंगा, and I'll perhaps take all the required knowledge. I will start developing that knowledge, and I will start walking the path towards realization of that goal, isn't it? अगर सिर्फ दिमाग में है तो फिर वो उसके ऊपर काम नहीं होगा, राइट?
Third one is developing the right financial habits. Now what could be the right financial habits? जैसे हम लोग ने बात किया start early, invest regularly, secure adequately. ना secure adequately मतलब क्या होता है? Cut off all the unnecessary expenses and only spend on the required which is necessary. ओके ओके सो ना हमको सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी थी, मतलब सिक्योरिटी नॉट इन सेंस कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, सिक्योरिटी इन द सेंस कि जैसे हम लोग जब कार चलाते हैं तो राइट आई नीड टू एंश्योर दैट माय ब्रेक्स आर इन प्लेस, आई हैव अ सेफ्टी मैकेनिज्म, राइट, एयर बैग्स है, जो बेसिक सेफ्टी मैकेनिज्म है वो होने चाहिए, राइट। नाउ सिमिलरली फाइनेंशियल लाइफ में जो है आपको सिक्योरिटी कहाँ से मिलती है? मे बी योर टर्म इंश्योरेंस, मे बी अ मेडिक्लेम, एन इमरजेंसी फंड, ऑल दिस वुड प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इक्विटीज में, राइट, मे बी मुझको जो है हेज आपको सिक्योरिटी देती है, राइट। सो मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बाय कर सकता हूं जिससे मैं अपना इक्विटी पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर सकता हूं, राइट। सो सिक्योरिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, राइट। सो आपके राइट फाइनेंशियल हैबिट्स जो है ये बहुत जरूरी है। हैविंग अ राइट सेविंग्स रेशियो, आपका सेविंग्स रेशियो कितना होना चाहिए? एनी गेसेस? हेल्दी सेविंग्स रेशियो कितना होना चाहिए? हेलो, I think if you take these things along with you after the session, during session, and you can apply that in your life, you can really stay financially healthy all throughout. Any guesses? कितना होना चाहिए आपका सेविंग्स रेशियो? What is a healthy savings ratio? 10%, 20%, 30%, 40%? What is the healthy savings ratio? 15%. कितना? 15? 15 to 20. Okay, okay. Anyone else? 100 रुपया अगर कोई कमा रहा है तो उसमें से कितना सेव होना चाहिए मिनिमम? हेल्दी सेविंग्स रेशियो क्या होना चाहिए? 10%. हाँ जी, 10%. 10%. Okay. So as a financial coach, a healthy savings ratio has to be 30% or above. Minimum 30% is a healthy savings ratio. Okay. Now let's come to the asset allocation. हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमारा जो है एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए, मतलब आई शुड हैव इनफ लिक्विडिटी, मेरा जो है एक्सट्रीमली रिस्की भी नहीं होना चाहिए और नाइदर आई शुड बी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। मतलब अगर मेरा पोर्टफोलियो 5% से ग्रो हो रहा है, एकदम मतलब बिल्कुल रिस्क नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन। और अगर मेरा पोर्टफोलियो जो है एकदम एक्सट्रीमली वोलाटाइल है तो भी प्रॉब्लम है, राइट, बिकॉज इस साल 25% रिटर्न है, अगले साल 2% रिटर्न है, तो भी प्रॉब्लम है, राइट। So I need to have a balanced asset allocation which is as per my financial goals, which is as per my age and situation. मेरा जो रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से होना चाहिए, राइट। सो दैट इज एसेट एलोकेशन. सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू शेयर यू अ सक्सेस मंत्रा फॉर द राइट, आई वुड से, रेशियो. तो आपके लाइफ में अगर ये 3 रेशियो अगर आपने फॉलो कर लिए, आपका लाइफ जो है वो हमेशा फाइनेंशियली हेल्दी रहेगा. यू विल बी एबल टू एंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम, इवन मतलब आपका कोई इवन व्हाइल यू आर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. सो आप अभी जो स्टडी कर रहे हैं, इवन लेटर, सो वो जो है मैं आपको शेयर करता हूँ वंस आई कंप्लीट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. सेकेंड इज आई कैन नॉट मास्टर all the things in life, right? So अगर मुझको कोई वेब डिजाइन करना है तो one is I can Google and use the free templates, but will it become a world class website? Will it become something which I will really be thrilled about, excited about? एक काम चलाओ वेबसाइट तो बना सकता हूँ, राइट, but if I require a professional one which I have to use it for my business promotion and for generating leads, yeah, can I do it myself without having significant knowledge and expertise? Obviously not, right? So seeking expert advice is a must. जैसे हम लोग जो है खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं,
Hello, how many of you self medicate? केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन खरीदते हैं? हेलो, I do. या सो इट कितने टाइम्स जाते हो, मतलब आप, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज? सो हेडेक होगा, लूज मोशंस होंगे, सिंपल सिंपल थिंग्स होंगे, तो आप आप केमिस्ट के पास जाके आप बाय करते हो, राइट? बट अगर सपोज it is something which is causing huge pain and it is prolonged illness, तो फिर आप केमिस्ट के पास जाएंगे या एक्सपर्ट के पास जाएंगे? Will you go to a specialist? Yes, sir. हाँ जी, क्या आप फिर भी केमिस्ट के पास जाएंगे? आप एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर करेंगे? Yes, sir. Specialist के पास ही जाएंगे. You will have to go to an expert, right? Specialized डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले तो आप डायग्नोस करेंगे and then you have to go to an expert, right? So initially जो है, अगर आप जो है आप कोई मेडिसिन लेते हैं, उसका असर नहीं होता है, then you go to doctor, right? Now ये जो ट्रायल एरर वाला जो फॉर्मूला है, बहुत बार जो है वो बैकफायर भी करता है, right? So one way of learning is trial and error, and second one is you have a guru, you have a coach who can help you learn faster. So an expert would make your financial life very, very I would say convenient, easy, and happy. So that's the reason why one should have a doctor, lawyer, a financial advisor in our lives, so we can save time, effort, and lot of money. बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते. सो व्हाट वर्क 30 इयर्स अर्लियर, आज वो वर्क नहीं करेगा. टाइम्स आर चेंजिंग, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स आर चेंजिंग, हैबिट्स आर चेंजिंग, मार्केट्स आर चेंजिंग. सो अगर मैं वही चीज जो मेरे पेरेंट्स फॉलो करते थे वही मैं फॉलो करूंगा तो शायद से मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, राइट? माय फादर he worked in a government organization for 30 long years. I have started my business at the age of 38. तो ये जो है डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है. उनके एस्पिरेशंस मेरे एस्पिरेशंस में बहुत फर्क है. सो जरूरी नहीं है कि वो जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से मैं सोचूं, राइट? सो सिमिलरली मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें जो है रिस्क और जो रिवॉर्ड्स होंगे वो डेफिनेटली अलग होंगे जो मेरे फादर की पोर्टफोलियो में थे, right? This is about the financial freedom. So I'm going to share 3 formulae which if you follow in your life you will realize financial freedom faster and easier. The first one is savings ratio. आपका savings जो है वो आपका कम से कम 30% होना चाहिए. अगर आपको faster realize करना है तो 35%. Okay. Then आपका debt ratio at any given point of time it should be less than 25%. अगर आपका जो debt ratio है, मतलब आपका जो EMI भरते हो, I mean not every EMI is unhealthy. आपके जो कुछ EMIs होते हैं, जैसे आप घर खरीद रहे हो, you are creating an asset which is earlier, right? अगर आप जो सेव करके उस asset को create करेंगे, it might take much longer, but because having your own house is also important because you want stability in life. तो उसको आप क्रिएट करने के लिए आप लोन, आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द पीपल टेक होम लोन. तो उससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको जो है वो रीपेमेंट का फैसिलिटी मिलता है, एंड यू आर एबल टू स्टे देयर, एंड आपको जो है सिक्योरिटी मिलती है. तो उसका जो है आपको EMI जो है वो आपका 25% और लेस होना चाहिए. तो मैं 100 रुपया कमा रहा हूं तो मेरा 25 या उससे कम होना चाहिए मेरा डेट रेशियो. सो द फर्स्ट वन इज सेविंग्स रेशियो, थर्ड वन इज डेट रेशियो. नाउ आप जो है कंज्यूम भी करने वाले हैं, यू नीड मनी टू लिव, यू कैन नॉट लिव इन फ्यूचर, यू नीड टू लिव इन प्रेजेंट एज वेल. तो आपको जो है कंज्यूम करना पड़ता है आपका घर चलाने के लिए, आपको जो है डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए जो भी है. तो ये कंजम्पशन रेशियो जो है वो आपका कितना होना चाहिए? एनी गेसेस? हेलो. सो आप पैसा कमा रहे किसके लिए? आपको आज जो है आपको लाइफ एंजॉय भी करना है, आपको जो है आप सस्टेन भी करना है, राइट? सो व्हाट शुड बी द कंजम्पशन रेशियो फॉर यंगस्टर्स, फॉर सिंगल तो उनके लिए तो सिग्निफिकेंटली हाई रहेंगे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज मैरिड एंड हु हैज किड्स.
तो उसका जो सेविंग्स रेशियो है वो अगर 30% है, उसका डेट रेशियो 25% से 25% हाइपोथेटिकली, तो उसका कंजम्पशन रेशियो कितना होना चाहिए? It should be again 30%. So consumption ratio 30%, आपका savings ratio 30%. So there has to be a balance between the two. जितना मेरा savings है उतना ही मैं consume कर रहा हूँ, right? So वो दोनों जो है वो दोनों match हो रहे हैं. फिर मेरा जो है debt ratio आ गया, तो 60 plus 25 would become my, right? Now in that case मेरे पास क्या रहेगा? I have a enough cushion. तो मेरे पास अभी जो है 60 प्लस 25, 85% खत्म हो गया, मेरे पास 15% का फिर भी बचता है मार्जिन. उसमें से 5% आई विल कीप एज लिक्विडिटी फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज, और बाकी का जो 10 है वो मैं किस तरह से डिवाइड करूंगा? 5% आई विल इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ, राइट? सो दैट आई कीप इंक्रीजिंग माई अर्निंग पोटेंशियल. मेरी जो स्किल्स है, मेरा जो नॉलेज बेस है, मेरा जो एफिशिएंसी है, वो मैं कंटिन्यूसली बढ़ाते रहूंगा, so that I'll be able to grow faster, right? And 5% is something which I will keep for charity, donation. Why? Because when I start the habit of donating to the needy, right, then वो क्या हो जाएगा? मेरे लाइफ का हिस्सा हो जाएगा. That's also a healthy financial habit. I understand the value of money and I will lead a need based life, not a desire based life or a want based life. तो मेरे हमेशा मेरे पास सरप्लस रहेगा और वो लैक नहीं रहेगा, राइट? एंड I'll be able to contribute to the society. So वो आप 30 साल कमा के आपने फिर बहुत सारा कॉर्पस क्रिएट किया और उसके बाद आपने उसमें से सिग्निफिकेंट 50%, 60% डोनेट किया. रादर आप आपने जब से कमाना चालू किया तब से एक स्मॉल पोर्शन जो है वो आपने डोनेट करना चालू कर दिया. दैट वुड मेक अ बिगर सेंस. और फिर क्या होगा? आपका वो जो हैबिट है वो आपका जो है वो कंटिन्यू करेंगे. यू विल बी एबल टू इन योर लाइफ टाइम विल बी एबल टू क्रिएट वंडर्स आउट ऑफ इट. यू विल मेक एबल टू इम्पैक्ट द सोसाइटी अराउंड यू, राइट? तो इवन वो 5% जो है, एंड देन जो है आपका वेल्थ एक बार क्रिएट होता रहेगा, पैसिव इनकम होता रहेगा, तो आपको 30% भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके एक्टिव इनकम से. हो सकता है आपको 5% किया, हो सकता है आपको एक्टिव इनकम की जरूरत ही ना पड़े. देन यू कैन इंक्रीज योर डोनेशन पार्ट, राइट? सो दैट्स हाउ यू कैन रियलाइज फाइनेंशियल फ्रीडम. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स? हेलो, hello, how many of you want to become entrepreneurs? Can I hear some yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट? तो आपको क्या सोचना है, मतलब which kind of business? ना just because you've done pharmacy आप कोई फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, or is there anything else that मतलब जरूरी है ऐसा कि मैं फार्मेसी मैंने कंप्लीट किया तो मुझको फार्मेसी में ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? व्हाट शुड बी द या इवन फार्मेसी में भी देयर कुड बी 100 आइडियाज, राइट? मे बी 1000 आइडियाज, राइट? सो व्हाट शुड मेक मतलब व्हाट शुड बी द आइडिया कॉन्सेप्ट जो है किसका बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, या व्हाट शुड बी द थॉट इन योर माइंड? तो आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगर आप सोच रहे हो अभी से? एनीवन? किसी का कुछ आइडिया है किसी के पास? हेलो, एनी बिजनेस आइडियाज? हाँ जी, फार्मा कंपनी. फार्मा कंपनी. सो आप क्या मैन्युफैक्चर करेंगे मैडम? I mean pharmaceutical products like tablets, capsules. Okay, okay, capsules. Okay, anyone else? एंड कोई रीजन उसके लिए स्पेसिफिक, मैम? एनी स्पेसिफिक रीजन? No, sir. I am doing B.Pharm, so I am interested in ओके, तो हमने देखा कि वेरियस एस्पेक्ट्स हमको देखने हैं कि मतलब कौन से बिजनेस में क्या मार्जिन है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कहाँ डिमांड ज्यादा है, राइट? वी विल हैव टू लुक एट ऑल दोस एस्पेक्ट्स. क्या कॉस्ट आता है,
क्या स्केल पे बनाएंगे तो क्या कॉस्टिंग आएगा, राइट? सो ऑल द एस्पेक्ट्स विच आर गोइंग टू मैटर. तो मतलब मार्केट में डिमांड क्या है, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू लुक एट. यस, हेलो हेलो, am I making sense? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so let's come to how many of you have watched any of the episodes of Shark Tank? कोई देखता है Shark Tank? Yes. सब लोग, I think बहुत सब लोग पढ़ाई ज्यादा करते हैं. Sir, they are raising hands. हाँ जी. They are raising hands. They are not unmuting hands. हाँ हाँ, okay okay okay. तो I am not able to see that. Maybe you know मेरा जो screen है. हाँ. So anyways, good that you some of you are watching this Shark Tank series. तो ये जो है angel investors, what they look for? आपने अगर एपिसोड्स देखे होंगे, so what all they look for? अगर कोई फंडिंग मांग रहा है ना, कोई बिजनेस पर्सन है, स्टार्टअप है, वो अगर फंडिंग मांग रहे हैं तो जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या देखते हैं? ऑन व्हाट बेसिस डू दे प्रोवाइड द फंडिंग? Neatness of the product. व्हाट आर द क्राइटेरिया? For the Yeah. demand. हाँ जी. हेलो. Uniqueness of the product. Perfect. What else? Whether that product would give them profit or not, or benefit in the future run. Okay, good. Anyone Is else? there any need of that product हाँ in जी, the हाँ जी. market? क्या डिमांड क्या है, राइट? What need is the product going to suffice? Okay. Anyone else? ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना बड़ा मार्केट है, अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है, राइट? ऑल ऑफ दिस. सो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस थिंग्स दैट एंजल इन्वेस्टर्स लुक फॉर. ओके, सो सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, जिसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपने सही से डिफाइन किया कि नहीं? या आपने बहुत सारे एपिसोड्स में देखा होगा ना कि अलग अलग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई. सो फर्स्ट थिंग इज आपने अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है वो सही है कि नहीं, राइट? सो अगर से फॉर एग्जांपल अगर मैं कैप्सूल्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो अगर आप प्रॉब्लम क्या है कि मतलब इंडिया में कैप्सूल्स जो है अच्छे क्वालिटी के मिलते नहीं है, या उसका जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंट है, या इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई का गैप है. व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट? शॉर्टेज है, क्या है, राइट? सो वो आपको अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने सही तरह से किया है, तो फिर आपने क्या सॉल्यूशन उसके लिए निकाला है? दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट? First defining the problem, then coming out with the solution. Now the solution that you have come out with is वो cost effective है, are people willing to pay a price for that, और वो opportunity कितना बड़ा है, वो कितना significant है, right? So आपका जो solution है वो unique है या different है? Suppose अगर आपने बोल रहे हैं आप food business start कर रहे हो, right? So आप fast food business start कर रहे हो, right? तो वो what is that, what is the value that you will offering through your फास्ट फूड बिजनेस? तो वो प्राइसिंग डिफरेंशिएटर है, या उसका जो टेस्ट है वो डिफरेंशिएटर है, आपने जो वैरायटी दे रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, पोजीशनिंग अलग है, प्राइसिंग. सो व्हाट इज द आपका डिफरेंशिएटर क्या है? अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो फिर हाउ योर प्रोडक्ट विल बी यूनिक, या आपका सॉल्यूशन यूनिक कैसे होगा, राइट? हाउ बिग इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी, राइट? वो सिर्फ वो स्केलेबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, राइट? उस बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हैं, राइट? वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी के लिए है, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, या वो नेशन वाइड है, या वो ग्लोबल है, राइट? एंड वो जो स्टार्टअप है उसका अर्ली ट्रैक्शन क्या है? उसने मतलब बीटा फेज में है, प्रोडक्ट टेस्ट हुआ है, टेस्टिमोनियल्स है उस प्रोडक्ट के, सो उसने अब तक क्या मार्केट शेयर अचीव किया है, या कितना सेल्स अचीव किया है, उसका अर्ली ट्रैक्शन क्या है? ओके, वो देखना पड़ेगा.
कितना कैपिटल है आज की तारीख में, किसने फंडिंग किया है, ऑल ऑफ दैट, राइट। देन फाउंडर्स कौन है, वो कितने पैशनेट है, उनका विजन क्या है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हु आर द पीपल, डू दे हैव इंटीग्रिटी, डू दे हैव वैल्यूज, व्हाट इज देयर विजन। नाउ ये सब शार्क टैंक में तो ये सब कुछ इतना डिटेल में नहीं बताते, बिकॉज इन अ 10 minutes presentation you will not be able to identify वो कितने पैशनेट है या उनके वैल्यूज क्या है, बट या इन द रियल लाइफ यस देयर आर सीरीज ऑफ मीटिंग्स यहाँ जो है वो सारी चीजें देखते हैं। तो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन लोग ने अब तक क्या क्या अचीव किया है, उनका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, हाउ सोशली कितना एक्टिव है, ऑल ऑफ दैट। सो उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस, लिंक्डइन कनेक्शंस, ऑल ऑफ दैट। तो ये सारा चीजें देखते हैं। पैशन जो है वो तो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती है, उनका जो विजन है उसके अंदर कितनी मतलब वो कमिटेड है उस अपने विजन के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन सैक्रिफाइस फॉर दैट, और उनका कितना स्टेक है उस बिजनेस में, राइट। तो अगर इफ दे हैव इन्वेस्टेड ओनली 1% एंड दे वांट 99% फंडिंग, then maybe so they don't have confidence in their or conviction in their own business, right. So and then last important thing is the financials of the business, right. तो उसके जो की मेट्रिक्स है, जैसे मैंने बताया, उसका ROI, ROE, उनका ROA कितना है, उनका जो कैश फ्लोज क्या है, कैसे है, टर्म्स क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है उनका, राइट। सो कॉस्टिंग कितना है, कितना कितना टाइम लगेगा ब्रेक इवन के लिए, उनका प्रोजेक्शंस कैसा है, 5 साल 10 साल में क्या उनको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारा जो है वो साउंड कितना है, राइट। तो एक तो जो है प्रैक्टिकल कितना है और कितना जो है वो रियलिस्टिक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर, राइट. So these are the things which any angel investor would look for while they invest their money, right. So because अगर वो hard earned money अगर invest कर रहे हैं तो they will look at all these aspects. और अगर कोई एंजल इन्वेस्टर कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है तो व्हाट विल बी देयर ROE, कितना उन लोग एक्सपेक्ट करेंगे, एनी आइडिया? 10%, 15%, 20%, 25%, कितना एक्सपेक्ट करेंगे वो? मे बी नॉट इमीडिएटली, 3 साल 4 साल 5 साल बाद. हेलो, 30% मे बी. एब्सोल्युटली 25% एंड अबव. तो 25% तो कम से कम उनको ROE चाहिए, अदरवाइज इट कोई सेंस नहीं बनता है ना. अगर मैं 15%, अगर मुझको सिर्फ 15% मिल रहा है तो वो तो मैं कहीं भी इन्वेस्ट करके मैं निकाल सकता हूँ ना. इवन इफ आई इन्वेस्ट इनटू कैपिटल मार्केट्स आई कैन इजीली जनरेट 15% काइंड ऑफ रिटर्न्स, राइट. तो अगर मैं कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है, अननोन एंटिटी है, नया बिजनेस है, तो ऑब्वियसली आई वुड एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न, ऑब्वियसली, राइट. ओके, ग्रेट. So these are the we'll take all the questions at the end. So these are the various aspects of angel investments. Okay, now how many of you have invested into equities? किसी का कोई investments है equities में? Anyone? Yes, sir. Hello, anyone of you investing into equities? Okay, so yes, I can see some hands. And anyone who has made significant profits from equity markets? मतलब significant in the sense reasonable profits which you can talk about. Yes, किसी का है जीरोदा पे अकाउंट, किसी का शेर खान या कहीं डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है जिसने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है? Any Warren Buffett, budding Warren Buffett in our session today? Yeah, Gaurav, Rushit, yes. Okay, so today I'm going to show you what is the power of equities, right, through an example. So let's okay, तो ये जो example मैं share कर रहा हूँ, it has perhaps been one of the most popular examples. बहुत सारे sessions में ये use हुआ है. तो 1980 में एक NFO आया था, NFO नहीं, IPO आया था, सॉरी फॉर दिस एरर. तो एक IPO आया था
जिसका नाम था विप्रो. So this company Wipro, I am sure everyone knows this company today, right? But जब 1980 में जो ये IPO आया था, hardly anybody knew what is Wipro into, right? So any guesses? 10,000 रुपया किसी ने अगर इन्वेस्ट किया होगा in the year 1980 in the IPO, तो आज उसका वैल्यू कितना होगा? Any guesses? Any guesses? More than 5 crores. Okay, चलो थोड़ा और बढ़ाओ. Anyone else? 300 crores. हाँ, 300 करोड़. ओके, एनीवन एल्स? और कोई थोड़ा और बढ़ाओ. किसी ने 5 करोड़ बोला, किसी ने 300. 300 करोड़ एक. इससे कोई ज्यादा बोल सकता है? एनीवन? हेलो. ओके, लेट मी शेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, तो ये जो है पहले देखते हैं. तभी ये जो था इशू जो था 10 रुपए का इशू था. दैट टाइम बहुत सारे जो आईपीओ आते थे 10 रुपए पे प्राइस पे आते थे. तो ये जो था एट पार इशू जो है 10 रुपए पे स्टार्ट हुआ था. तो 10,000 रुपए का जो है 100 शेयर्स मिला होगा जिसने बाय किया होगा आईपीओ में, राइट? 81 में फिर वो उसको बोनस मिला 1:1, तो वो 100 के 200 हो गए. सिमिलरली 85 में 200 के 400 हो गए. एंड देन फिर 86 में जो है वो शेयर स्प्लिट हुआ तो 400 के 4,000 हो गए, मतलब 1:10 में स्प्लिट हो गया. सिमिलरली 87, 89, तो ये बोनस होके ये जो 100 शेयर थे उसके इन 2019 आज जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 100 शेयर के कितने हो गए? कैन एनीवन रीड दिस नंबर? Slide. हाँ, We cannot see the slide. one sec. Okay. अभी दिख रहा है? हेलो, Sir, दिख रहा है? No, sir. No, sir. स्लाइड नहीं दिख रहा है ये? No, sir. Okay, one sec. Let me try once again. Is it visible now? Hello? No, sir. No, sir. It isn't. Sir, you can unshare the slide and reshare it. हाँ, वही कर रहा हूँ मैं. Just क्यों हो रहा है ऐसे? Sir, with the PPT, we will present. एक सेकेंड ना. हो रहा है ये? no, नहीं हो रहा है. एक मिनट. एनीवेज, मिहिर, कैन आई जस्ट सेंड यू दिस? आई एम जस्ट Yes, sir. Sure. शेयरिंग दिस विथ यू. मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँ, मेल पे करूँ? WhatsApp. अच्छा, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है. प्लीज शेयर दिस. You can come to this slide. Power of equity straight away. Okay. So till then, yeah. Okay. So till then, any questions so far? जब तक मीर वो स्लाइड प्रेजेंट नहीं करता. You haven't हाँ जी. right PPT. आपने भेज दिया मेरे को PPT के जगह पे. Yeah, okay. So anyone would like to ask any questions so far?
personal finance, business finance, angel investing. So can you emphasize on SIP? SIP, yeah, I'm coming to that. I'm going to come to that. Sir, I have a question. Yeah, please go ahead. Sir, will we also be liable to pay taxes? For example, if we are the students and we are running some side-based business and all, right, and we are, doing some short work, so are we also liable to pay taxes and all? Yes. So अगर आप सपोज बिजनेस चला रहे हो, आपने खुद का स्टार्टअप, आई एम श्योर बहुत सारे आपने सुने होंगे स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज, राइट? 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, एंड इज रनिंग अ बिजनेस, राइट? यस, सुना होगा आपने, राइट? Yes. Obviously, वो सारे जो है वो दे आर लायबल टू सेंड, दे आर एलिजिबल फॉर टैक्सेस। तो वो जो बिजनेस जो होता है उसका P&L बनता है और उनका जो बैलेंस शीट बनता है, कोई भी बिजनेस। तो जैसे आपका जो बिजनेस है उसमें आपका एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, तो उसमें आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, सारे कुछ आ जाएंगे, राइट? एंड आपको नेट जो है वही आपको पे करना होता है एज टैक्सेस। सो यस, टैक्सेस विल बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट वो जो है आपका टैक्स कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। सो आपका एक तो बिजनेस का कितना टैक्स है, और बिजनेस में ओनर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है। सो सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, यू आर वन ऑफ द फाउंडर्स, राइट? हो सकता है आपके बिजनेस में देयर कुड बी अदर, आपने अगर पार्टनरशिप फर्म चालू किया होगा तो और दूसरा कोई पार्टनर है, तो फिर आपके जो है बिजनेस में से आपने कितना पोर्शन जो है आपके एज सैलरी या प्रॉफिट लिया है आपके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, तो उसके बेसिस पे आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। सपोज आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस में से आपने एक्स अमाउंट लिया है, तो आपका इंडिविजुअल टैक्सेशन एक हो जाता है, दैट इज योर इंडिविजुअल टैक्सेस। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो है उसके बेसिस पे कंपनी का टैक्सेशन आ जाएगा। नाउ कंपनी आल्सो कैन, वो जो है वो टैक्स जो है उनका जो प्रॉफिट है वो रिजर्व्स में ऐड करके जो है वो प्रॉफिट, मतलब उनका जो नेट प्रॉफिट है वो टैक्सेशन जो है वो रिड्यूस कर सकता है। सो मैंने वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर दिया, एंड मे बी मैंने जो है वो बिजनेस एक्सपेंशन में मैंने वो पैसा खर्चा कर दिया। तो मे बी फर्स्ट 2-3 इयर्स मैंने जो है कंपनी में, मतलब अगर कैश फ्लोस पॉजिटिव भी है, मैंने जो है वो वापस बिजनेस में डाला सो दैट माय बिजनेस कीप्स ग्रोइंग। बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं वो फर्स्ट 2-3-4 इयर्स जो है वो बिजनेस में जो कैश फ्लोज है, राइट, मतलब वो सो कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट जो है वापस बिजनेस में फ्लो बैक करते हैं, राइट? बिकॉज आपका जो है कैपिटल है, आपका एक्सपेंसेस जो होता है उसको मीटअप करने के लिए 3-4-5 साल लग जाते हैं। आपका सेटअप कॉस्ट भी होता है ना बिजनेस में, आपने कुछ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, राइट? तो वो हो सकता है बोरोड कैपिटल पे हो या खुद का कैपिटल हो, राइट? तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आप कुछ साल के बाद जो है वो एक्चुअली बता सकते हो, एंड यू विल पे ऑन टैक्सेस, राइट? Mihir, have you got the PPT? Yes, sir. We are working on it. Yeah. Okay. Any other question? Sir, if we talk about real estate as an asset, asset as in our portfolio, then I think it's a heavy loss, because we see real estate CAGR, it's almost lingering around the 1.6 to 3%. Right. So what do you think? Is it a good investing asset? Because as in my view, it is not an asset, it's a liability. Okay. So okay, रियल एस्टेट में जो है ना उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लैंड, ओके, दूसरा कमर्शियल, थर्ड रेसिडेंशियल, ओके। सो आज भी ना लैंड जो है इज अ स्केर्स एसेट। सो अगर मुंबई में अगर मेरे को एक प्लॉट ऑफ लैंड, अभी आप देखेंगे तो बहुत सारा ह्यूमन क्राई मीडिया में चल रहा है लैंड एसेट्स के ऊपर, राइट? थ्रो अवे प्राइस में मिला था एंड आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है, राइट? सो लैंड एसेट इज स्टिल
a very very powerful asset class, but land bank जो है मुंबई में ना के बराबर है, right? Now if you buy a piece of land in an area which is going to be developing at a rapid pace, right? tier 2 tier 3 tier 4 सिटी में अगर आप बाय कर रहे हो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, right? then that land asset can really give you huge value for money. आपका जो ROI significant रहेगा, right? But what you're talking about is a residential property in a city like Mumbai जहां already बहुत supply excess में है, and therefore the returns are on diminishing, right? Second change which has happened in the real estate is since the inception of RERA, आपने सुना होगा, right? जो अभी जो गाइडलाइंस है रेरा के, उसके हिसाब से जो है आई कैन नॉट बाय इन कैश. पहले जो था 15-20 साल पहले जो है आप 30% 40% जो है वो कैश पे करते थे बिल्डर डेवलपर को, राइट? मेनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू डिमांड ह्यूज ब्लैक मनी. तो बहुत सारा ब्लैक मनी जो है, अनअकाउंटेड मनी जो है वो रियल एस्टेट में पार्क होता था. आज 2014 के बाद से वो धीरे धीरे कम होके अभी ना के बराबर है. एंड देयरफॉर जो रियल एस्टेट में जो इन्फ्लेटेड रिटर्न्स बन रहा था वो अभी खत्म हो गया है. तो अभी लास्ट 5 ईयर से तो हम लोग देख रहे हैं स्टैग्नेटेड हो गया है रियल एस्टेट. आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिडेंशियल. बट फिर भी बहुत सारे जो सिटीज के बाहर, ए कैटेगरी सिटीज के बाहर जो है लैंड इज स्टिल गोइंग टू बी अ आई वुड से वर्थ इन्वेस्टिंग or profitable asset. Yeah. But what about if we invest in a real estate which is like in UAE or in North America? Because if a person, if we see price to earning ratio, price to income ratio, so in India price to earning ratio currently is around 12, and if we compare it to USA or UAE, USA has price to income ratio as 3.5 somewhere around, and UAE has 5.29, which is very much lower than India. Right. So what do you think, can we invest our money for real estate in abroad countries? Okay, so now so now an average American उसको 15 साल लगते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए. इंडियन जाता है यूएस में 5 साल में खरीद लेता है खुद का प्रॉपर्टी. So that's the difference between तो हमारा जो अपब्रिंगिंग रहा है ट्रेडिशनली कि हमारा जो है रियल एस्टेट में जो है इंक्लिनेशन ज्यादा होता है. एंड इफ यू सी मोस्ट ऑफ द एनआरआईज हु आर अक्रॉस द ग्लोब ना, दे इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट बिकॉज दैट गिव्स देम स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी देता है, राइट? तो अगर आप रह रहे हो तो वहां आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूके में, यूएस में ऑब्वियसली वहां रेट बोरोइंग जो कॉस्ट है बहुत लो है, तो आपका जो है PLR कम है, एंड देयरफॉर इट मेक्स सेंस टू बाय योर ओन प्रॉपर्टी, राइट? इंडिया में आप जैसे बोल रहे हो कि जो है इट इज वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर इन सिटीज लाइक मुंबई. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट इज वेरी हाई. तो in financial terminology, buying a house would be a costly proposition. Staying on rent would be a very very cheaper proposition. But still people buy property because उनको लगता है कि नहीं, it gives them a sense of ownership. स्टेबिलिटी मिलता है लाइफ में, सिक्योरिटी मिलता है. हर 11 महीने के बाद या हर 36 महीने के बाद उनको नया घर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो दैट्स द रीजन. तो एक इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है प्रॉपर्टी से. बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई थिंक द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स to financial assets. That's a significant change which is happening not just in India, across the globe. Thank you, sir. Yeah. सर वो विप्रो वाला स्लाइड नहीं दिख रहा. Yeah. So I think Mihir is working on the slide. Mihir, is the presentation ready? Can you please share that? Yes, sir. It is being shared. Okay. You can. Yeah. Okay. Yeah, is it visible now? Hello? Yes, sir. The presentation is visible. Okay, fine. Okay. So ये जो है मैं 10,000 रुपीज अगर विप्रो के IPO में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो वो 100 शेयर जो इनिशियली मुझको मिले थे, आज जो है वो शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है, कैन एनीबडी रीड दिस डिजिट?
ये नंबर कितना है? 100 शेयर के कितने हो गए? इन 2019 जो लास्ट बोनस इशू था विप्रो का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट इज दिस नंबर? Sir, that particular slide is not in the presentation. अच्छा, ये दिख नहीं रहा है? नहीं. ओके, अभी नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं सर. नहीं दिख रहा है? ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्लाइड. ये स्लाइड विजिबल है या ये स्लाइड ही विजिबल नहीं है? हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सक्सेस मंत्रा वाला बेस स्लाइड दिख रहा है. ओके, सक्सेस मंत्रा कहाँ गया? पीछे आ गया. ओके, एक सेकंड. कैन यू गो बैकवर्ड? अदिति. आप पावर ऑफ इक्विटीज में आ जाइए ना. Aditi, please change the slide. तो पावर ऑफ इक्विटी वाला भी स्लाइड नहीं है इसमें. नहीं है इसमें. आपने जो पीपीटी बनाया है उसमें, आपने जो भेजा है उस. ओके ओके, एक सेकंड ना. लेट मी जस्ट I just mail that. Okay, one second. One sec. I have just mailed it to ISCB जो आपका मेल है ना उधर. हाँ. So anyways, we'll cover any other questions if any. May have you, can you confirm if you have received the mail? And if you can just work on that. Received the mail yet? Yes, sir, received. Yeah. So till you present the presentation, yeah, I would like to take any questions from the audience. Yeah, anyone else? Sir, as cryptocurrency is gaining its momentum in the market. Right. What are your point of views if individual like us start investing in it early stage? Right. Okay. So I think cryptocurrency is an alternate asset class, and still the regulations are not in place in India and in many of the other parts of the world also. Because there is no underlying asset to that. I mean, for equity markets, we know the stocks, underlying stocks. We know we can study research on the stocks, the technicals and the fundamentals of that. But in case of cryptocurrency, there is very little information available in the public domain about what is the underlying asset class. Similarly, the regulations and the legalities are still not in place. So therefore, it is very, very, I would say, risky to invest as of now. Now, as you know, the finance minister has already announced that by March, we will have our own digital currency, which can be exchanged with cash. And we'll be having a legal framework to it. So once that is in place, maybe we'll understand the nitty-gritties of it, the risk and the rewards of this particular asset class, and then we can think whether to invest or not. But as of now, a complete no-no to this asset class.
So it's a fad as of now. Yeah. So I know so many people have lost huge monies into cryptocurrencies. Some have made some decent amount of monies, but अभी जो चल रहा है उसमें कुछ भी मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है. That's how it is. Sir, we have shared the slide. Okay, so how do I present this? Open share try करूं? You don't need to present. We are presenting it. You Okay. can explain it. Okay. It is visible. Okay. It is visible, right? Okay. So now you can see कितना शेयर्स हो गया, वो 100 का कितना शेयर्स हो गया? Yeah. 56 lakhs. हाँ जी, कितना है वो? 25 करोड़ 6 लाख या 2 करोड़ 56 lakhs, right? Yes, sir. तो 100 शेयर्स का जो है 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स हो गया. Just number of shares. Now what is the value of the share today? एक शेयर का 573.55. So what is the value today of the 10,000 rupees invested in 80? उसका क्या वैल्यू है? 14,000 crores. हाँ, कितना है ये? 1468 crores. 1,468 crores, right? Isn't it mind-boggling? 10,000 रुपए. And imagine maybe your father or grandfather, whomsoever, अगर उन्हें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता विप्रो में, right? Imagine आपके फैमिली में 100 शेयर जो है 1980 में किसी ने बाय किए होते हैं. Yeah? Yes? So मतलब I think 3-4 पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, right? 1,468 crores. Yeah. So that is the power of equities. Got it? So आज कौन सा स्टॉक जो है वो विप्रो की तरह रिटर्न्स देगा? Nobody knows. Yes. But definitely ऐसे बहुत सारे जो शेयर्स हैं, they are giving significant returns. These are called multi-bagger stocks. 5-7 मतलब 5 साल में 5 times रिटर्न्स देने वाले, 10 साल में 10% 10 times रिटर्न्स, 15 times रिटर्न्स देने वाले. There are n number of stocks, multi-bagger stocks, right? And there is a huge potential which the stock market offers, right? And therefore we need to have a substantial portion of our investments into equities, right? Now not everyone can identify these gems in our portfolio, right? And therefore we need to have experts, right? So there are so many but ये जो वेटिंग है 40 साल जो है ना, मतलब जैसे वॉरेन बफेट को जो है इतने साल लगे बिलियनर बनने के लिए, वैसे ही विप्रो को ग्रो होने के लिए अ सिग्निफिकेंट पीरियड लगता है. कोई बिजनेस को जो है ब्रेक इवन करने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक टाइम फ्रेम लगता है. 10, 15, 20, 25 साल लगते हैं, राइट? सो वो जो है तब जो है वो जायंट बनता है, एंड देन ये जो है रिटर्न्स डिलीवर होता है, राइट? इट डज नॉट हैपन इन द फर्स्ट few years, right? And that therefore patience is very, very important in equities, right? Now 80 से लेके 2022 तक बहुत सारे इक्विटी मार्केट्स में बड़े बड़े इवेंट्स आए थे, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स. हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, देन वी हैड दिस 2008 में लीमैन क्राइसिस हुआ था. लास्ट 2 साल पहले जो है वी हैड अ ह्यूज डिसरप्शन बिकॉज ऑफ द कोविड-19. तो ये सारे जो है अभी ये यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट इक्विटी मार्केट हैज गिवन ह्यूज रिटर्न्स, higher than any other asset class, more than gold or real estate, right? Yeah, can we move to the next slide, Mir? Sir, I have a question. Yeah. Bolo na. Sir, I mean, like, if a 19 or a 20-year-old guy or a girl, if they want to, get the, proper knowledge of the market, and like, if we want to start investing at this age, so, like, can you just tell us where will be the trusted person or the site where we can contact to get the
proper knowledge of the same? Okay, so एक तो book knowledge होता है और एक practical knowledge होता है, right? First thing is you need to have a guru. कोई भी आपको knowledge लेना है, कोई भी field में लेना है ना, तो आपको एक coach या guru की जरूरत होती है, right? So if you have somebody who is there to guide you and make your learning curve, faster, that is how you should be able to, because otherwise आप 15-20 साल 25 साल आपको लग जाएगा to understand the financial markets, capital markets, the nitty gritties of that, and then आप जो है खुद आप investment करना चालू करेंगे. So even Warren Buffett had a guru. Everyone in our life, Sachin Tendulkar had a guru. So the first thing that one must have is आप unlike वो Zerodha में account, because that's only आपको जो है एक platform देता है, but एक गुरु जो है आपको बताएगा कि what are the things which we should look at while investing. तो टेक्निकल्स में क्या क्या देखना चाहिए, फंडामेंटल्स में क्या देखना चाहिए, राइट? सो राइट फ्रॉम द पी रेशियो, पीबी रेशियो, उस कंपनी का कैश फ्लोज क्या है, उसका बोनस हिस्ट्री क्या है, उसका 52 वीक हाई लो क्या है, आज उसका टेक्निकल में पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है, वो ब्रेक थ्रू लग रहा है कि नहीं, सो वो सारी चीजें जो है आपको जाननी जरूरी है. और वो कैसे, कहाँ रीड करनी है, कहाँ आप चेक कर सकते हो, what are the free tools available, आपको जो है वो मालूम होना चाहिए. एंड इसके लिए you require somebody to guide you, hand hold you in this journey, because जैसे आपको वो जो है ना टेम्पटेशन आता है कि नहीं, I can earn huge monies, you have a equal probability of losing money, right? So you have to be very careful, isn't it? Yes, sir. Yeah. Can we move to the next slide? Wealth creation through mutual fund, SIP. Yeah. Okay. So see, mutual fund is now very, very popular. I would say tool to create wealth. बहुत सारे जो लोग हैं आज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, either through lump sum or through SIPs. And SIP has emerged as the, I think, the most convenient, the most easiest way to create wealth and achieve our financial goals. Because उसमें क्या है करना, आपको एक सिर्फ एक allocate करना है एक amount, right? चूज करना है फंड और आपका बजट बताना है, rest everything the fund will do, the fund manager will do for you, right? So I'm just sharing a couple of examples. एक जो फंड है उसका मैं, ये फंड इंसेप्ट हुआ था अगस्त 30 में. आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर फंड. ये जो है एग्जांपल मैंने लिया है आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है. सो 2002 से 2022 20 साल का जर्नी है इसका. अब तक 20 साल कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज 19 ईयर्स इसके हो गए हैं. तो जिसने 1 लाख रुपया डाला था, आज उसका वैल्यू है 34 lakhs. सो 34x जो है रिटर्न्स इन अ स्पैन ऑफ 19 years थ्रू लंप सम इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड दिस हैज नॉट बीन अ फ्लैट रिटर्न. और ऑब्वियसली इसमें ऊपर नीचे वोलेटिलिटी होगी, एंड इसके बाद ये जो रिटर्न्स बना है. बट एंड अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड. मैंने एक एग्जांपल दिया है, राइट? सो 34 times रिटर्न्स इन 19 years. एंड ये जो है 2022 जैसे जैसे नंबर ऑफ इयर्स बढ़ेगा, ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. ओके, सो अगेन यही फिगर अगर आपको सिप में चेक करना है, तो अगर किसी ने अगर सिप किया होगा 10,000 रुपया फॉर द सेम पीरियड, राइट? तो उसका जो रिटर्न है 10,000 रुपए का मैंने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 into 19 number of years. So 1,20,000 into 19, that is 1.2 into 19. तो इसी ने इन्वेस्ट किया होगा करीबन 22.8 लाख रुपीस. उसका जो वैल्यू है आज की तारीख में वो 1.52 crores है, राइट? बिकॉज ये जो पैसा आपने लमसम नहीं इन्वेस्ट किया है, हर महीने आपने डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट किया होगा. नॉट एवरीवन वुड बी हैविंग अ ह्यूज कॉर्पस अलोंग विद देम, बट मेनी ऑफ द फैमिलीज दे कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. छोटा अमाउंट 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो, और वो आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है आपके अंदर इंक्रीज हो जाता है, एंड उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है दैट बिकम्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. तो ये जो है आपका 10,000 का SIP जो है उसका करंट वैल्यू जो है 1.52 crores है. सो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? सो
another example which I can share with you is DSP FlexiCap Fund. So DSP FlexiCap Fund जो है ये जो है इंसेप्ट हुआ था, this was incepted in the year 1997. जिसने 1 लाख रुपए डाला होगा 1997 में जब इसका NFO आया था, उसका आज जो वैल्यू है वो है 77 lakhs. ओके, सो 1997 से लेके आज तक जो है विच इज अ स्पैन ऑफ 25 years. सो 25 years में 1 लाख रुपए का जो वैल्यू है वो 77 lakhs हो गया है, राइट? सो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. इक्विटी मार्केट्स में जो ये पोटेंशियल है ये हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स, एंड SIP इज द मोस्ट कन्वीनियंट टूल टुडे टू क्रिएट huge wealth through the power of equities. So not everyone would be able to spot. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया विप्रो का, वैसा ही there would be 10 other examples where people have eroded money. Not every stock has grown like Wipro, right? So you know equity market में it's a zero sum game. कोई कमाता है तो कोई गवाता है, right? So somebody sells and somebody makes no, वो आप किससे बाय कर रहा है तब वो उसके पास पैसा मिल रहा है, और वो कब बेचता है तब उसको वेल्थ क्रिएट होता है, राइट? सो इट्स अ जीरो सम गेम. एंड इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया विप्रो का, देयर वुड बी 10 अदर एग्जांपल्स जहां जिसने 1 लाख रुपए डाला था उसका आज जीरो हो गया है, स्टॉक डीलिस्ट हो चुका है या उसका वैल्यू जीरो हो चुका है, 100 रुपया हो चुका है. देयर वुड बी 10 अदर एग्जांपल्स. तो therefore it becomes very, very critical to choose the right kind of stocks or funds to create wealth. And for that, an expert, till you become an expert advice is something which you must seek. Yeah. Okay. So let's move to the next slide, which is success mantras. Okay. So I'm going to share a few success mantras. I think it's my honor today to share my wisdom with you. Last 2.5 decades, whatever I have learned, I would be happy sharing with all of you. So the first thing which I would share with you is, if you want to realize financial freedom, focus on financial discipline. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, संस्कार बहुत जरूरी होते हैं. So for anything in life, discipline is very, very important. वो डिसिप्लिन जो है वो इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. तो आपको मैंने बताया फाइनेंशियल रेशियोज जो है आपका हेल्दी होना चाहिए. यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली, आपको सिक्योर करना है एडिक्वेटली, यू शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हेल्थ टर्म इंश्योरेंस. आपका जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, एंड आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आपके लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए हैंड्स डाउन. मतलब अगर मेरा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आज अगर 10% है और मेरा पोर्टफोलियो 15% से ग्रो हो रहा है, दैट मींस आई एम एबल टू बीट द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हैंड्स डाउन सिग्निफिकेंटली, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि मैं WPI या CPI की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, बिकॉज माय लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कुड बी इजीली हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स और द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके. Second mantra which I want to share with you is, जैसे वो 3 Idiots में बताया है ना कि सक्सेस को मत फॉलो करो, आप जो है कामयाबी के पीछे मत भागो, आप जो है आप अपनी एबिलिटी के ऊपर फोकस करो, राइट? तो पहले काबिल बनो. तो स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस विल फॉलो यू. सो जो भी आप कर रहे हो ना, 100% कमिटमेंट से करो. आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, कल को उठ के आप आपका बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी करेंगे उसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट इट, isn't it? If you're not enjoying what you're doing, then आप आपका 100% दे ही नहीं सकते, right? Deserve before you desire. So I want to buy a car, I want to buy, मेरे बहुत सारे desires हो सकते हैं, but before I actually fulfill my desires, I need to deserve. तो मुझको जो है अपने एबिलिटीज, अपनी कैलिबर, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज के ऊपर वर्क करना होगा, सो दैट आई एम एबल टू डिजायर दैट. अदरवाइज वो डिजायर्स फुलफिल करने के चक्कर में जो है बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ सकती है, राइट?
So if somebody deserves all these things, automatically वो उनको मिल जाएंगी. उसके लिए वो उनको मेहनत ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, because success will follow them, money will follow them, everything else, शोहरत उनको follow करेगी. Now don't go for business which will give you more profits. Okay, if you solve a bigger problem, automatically your business will become profitable. You have heard of Elon Musk? Elon Musk जो है आज दुनिया के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है वक्त बिताता है, राइट? ही वांट्स, उसके जो सबसे बड़े जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, SpaceX बोलिए या he wants to set up a colony in on Mars, right? That is one of his dreams. Second जो है, he wants to reduce the travel time significantly, right? तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है आज की तारीख में जो है उसके ऊपर वो काम कर रहा है. So that's one area. Convenience. He wants to provide internet facility not to one specific state or region, but for the whole of planet Earth. So if you become a problem solver, people will be more than happy to provide you with money, right? So बिल गेट्स बोलो या ओला, उबर, जितने भी फाउंडर्स हैं उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया. आज जितने ह्यूमैनिटी को जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, वेदर इट इज फ्यूल का प्रॉब्लम है, जो भी क्राइसिस जो है तो वो सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग हमारा टाइम, एनर्जी अगर इन्वेस्ट करेंगे, देन एंड इफ वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, वी विल बी एबल टू जनरेट ह्यूज फंड्स for our business. Okay, think win equation. Matlab, if I am doing a business, then I should not just think about my profitability. I should look at taking care of my employees, my stakeholders, investors. I should think about whether my nation is going to benefit out of it and the whole humanity is going to benefit out of it. Okay, so one example I can give here is Tata Group. Okay, so Jamshedji Tata जिन्होंने, and this statement is from ये जो statement है, it is taken from a book which is written on the life of J.R.D. Tata, Jamshedji Tata. So उन्होंने जो है उनके book, the title of the book is Beyond the Last Blue Mountains, right? And this book has influenced me tremendously, and today I have always followed this principle of win. So if I am able to solve a problem, so India में financial awareness बहुत कम है, उसको बढ़ाना है, लोगों को जो है अच्छे financial habits लगाना है. If I have to help people realize financial freedom, I have started this business, and through this I am able to help people achieve their dreams, goals, and realize financial freedom. And it is good for me, it is good for my end users, it is good for the nation, it is good for the human race, and मेरे business में जो invest करेगा उसको भी फायदा ही होगा. So all of that is a win equation, right? So when you think on these lines, your business will not only be profitable, it will be sustainable, and you will be I would say contributing to the world at large, right? Now ये जो मैंने ये मेरे LinkedIn profile में mention किया है, and I think this is the success mantra, my success mantra. Connecting the 4 P's. Now, any one of you have identified what is your passion in life? Any one of you? Hello? If you have identified your passion, wonderful, right? I'm sure all of you know your personality type, right? So आप कितने extrovert है, introvert है, आपका X personality, various shades of personality, right? 9 different personalities. तो वो आप easily find out कर सकते हैं. There are so many ways to do that. तो आपका passion अगर आपने identify कर लिया है, and if you choose a profession which suits your personality, which you are very passionate about, and if you can link your life's purpose to it, then your life is going to be a happy journey. It will become blissful, and that's what has happened to me. I have been able to connect the 4 P's of of my life, and automatically happiness and peace of mind is something which is followed. Success, money, all of that will follow you.
So this is what I have to share with you. So profit जो है would automatically be a part of the equation. यहाँ 4 P's में मैंने वो कोटलर का जो है प्लेस, प्राइसिंग, प्रोडक्ट और जो पोजिशनिंग है वो नहीं इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट किया है. रादर माय पर्सनालिटी, आई गो इनवर्ड. अगर आप एप्पल का बिजनेस देखेंगे या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस का मॉडल देखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी, यू हैव टू लुक इनवर्ड्स. So what is the contribution I'm going to make? What is my purpose of business? So अगर आप Apple का जो अगर mission statement, vision statement पढ़ेंगे तो then it is to provide तो उनका लोगों का जो है लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कीजिए आप. That's how it is. So उनका लाइफ में कन्वीनियंस आप क्वेश्चन ऐड कर रहे हो. So if I am able to connect these 4 P's in my life, I have, and this is my success. So I have been able to stay happy. मेरा जो business है has grown significantly, and I think this is what I have to share with all of you. Okay, and the last one here is your network is your net worth. So आपका जितना network है, आज I do not have a sales team. I do not have sales force at all. मेरा जो word of mouth से ही मेरा business grow हो रहा है. I think many of the people in this world who have a great network today are extremely successful because today network is your net worth. So how many of you have a LinkedIn profile? How many of you have a LinkedIn profile? Hello? Yeah, can all of you raise your hands? I think we have last 5 minutes I'm going to take. Yeah. Hello. If Yes, I can have sir, a raise of hands. they have raised the hands. Yeah, okay. I'm not able to, I think I am not able to view this. Okay. 1 second. Okay. So how many connections do you have on your LinkedIn profile, and how many of them are active connections? So having a network is very, very critical in today's times. You can reach out to any one of them. If you are in pharma sector, I'm sure you should be following, the right people in your industry. And not just in pharma sector, I would say, अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं तो start following the leading entrepreneurs in the country and the globe. There's so many, inspirational personalities on LinkedIn platform. Do follow them, and you will start, finding, start reading their post and start interacting with them. I'm sure if you build the right connections, you can go a long way, right? So ये बहुत critical है आज जो है technology and जो social media networking is very, very important, right? So you will be able to connect with anybody and everybody, and you will be able to learn so many things, and you'll be able to communicate a lot of the ideas through your network. Okay, so I think we are on the last few slides. Yeah, I think we have a journal, monthly journal, which we send to all our prospective clients. Now, all those who want to have this journal, this is a free journal, and anyone can subscribe to this. I write a lot of articles. We also have market outlook, market updates, and a couple of articles which are on personal finance. There are quotes, there are this quiz. There's a lot of, I think, value in our journal, and we have more than 10,000 subscription base, and all of you can subscribe to this. This can add value to your knowledge.
Yes, I'm sharing this because I think this can also help you. I'm on the verge of completing up my first book. Can all of you see the title? Mir, can you just take them to the book which Gaurav, can coming you soon? change the slide? Yeah, please. So after the journal, monthly journal, there's one slide coming soon. This is Yes, sir, yeah. So this is my book, which is going to be in the hard copy as well as the digital version. It will be available on Amazon, Flipkart, and you can also buy the hard copy. It will be available on Kindle as well. So this book is for anybody and everybody. The title of the book is Invest Wisely, Stay Lively. It will talk about various concepts of finance, why financial planning is important, the various asset classes. It will talk about various success stories, how people in different life stages they have planned and they have realized financial freedom. So it's a book for all age groups and for everyone, and very simple layman's language, so no complicated financial terminologies, and there are illustrations and there are facts and figures, and I think this will be a great value addition to all those people who are seeking financial freedom. So the basics and the important aspects of personal finance are all covered into that. My 2.5 decades of wisdom is in an hour is there in this book. Okay. So any questions that you have, feel free to ask. I have not kept any time frame for that, but yes, maybe we can have 15 minutes window and we can then end the session. So anything which you would things which I would have not covered in my presentation and which you feel is significant, feel free to ask, or anything which I have covered during session and which is not clear to you, you have any queries, feel free to ask. Yeah. Hello. Sir, I guess we have covered the questions in between, so there aren't any questions. Okay, so if there are no questions, I think we can then end the session. But before that, if you can just on your videos for a second, we can have a group photo. I think that will be great. I would like to have this group photo. Yes, sir. Yeah, if you can just request the participants. Everyone, please switch on your cameras. And just have a group photo and that's it. Yeah. Okay. So I'm done with my session. Any questions, or we can conclude the session? The host will conclude the session. Yeah, sure. That was really informative, sir. We really got to know a lot regarding financial awareness. So we have covered most of the questions in between. If anyone has any questions, so please ask. Yeah, so in the last slide, I have kept my email ID, mobile number. All the communication channels are open. Feel free to be in stay in touch with me. So my website, my email ID, my mobile number is there with Mir. Mir, you can show it so people can make a note of it. And if you have any questions in mind which you do not want to ask in front of everyone, feel free to mail it to me and I'll be happy to answer your queries. I will share the details with them.
Yeah. So students, please fill the feedback form that has been posted on the chat box. Over to you, Gaurav. What an amazing session. Thank you, sir, for addressing all your expertise. I would now request our placement cell coordinator, Ms. Judy Parekh, to give a vote of thanks. Julie, you are on mute. Hello, am I audible? Yeah. Yeah, sir. So we show really immense gratitude for taking your precious time from your schedule and to impart valuable information. We would now like. Julie, you are not audible. Hello. Yeah. Yeah, so we show immense gratitude for taking out your precious time from your schedule to impart valuable information. We would now like to felicitate you with a certificate of appreciation. Thank you. On behalf of our IIC and placement cell, I would also like to thank our faculties for gracing this session with their presence. And last but not least, I would like to thank our audience for being an active part of the session. Thank you so much, Vipul sir. It was an amazing session. Thank you so much and wish you all the best. Thank you, Juhi, for this wonderful vote of thanks. I will now request, thank you so much, Vipul sir. The session was really great. IIC BNCP and Placement Cell will continue to bring such alluring events in the upcoming academic year. We hope you had a good time with us. Stay safe and take care. Thank you. Thank you.